Hello everyone, गुड मॉर्निंग। सो कंपाइलर डिज़ाइन में सभी का स्वागत है। वेलकम बैक अगेन। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर, ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म मी, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं? इज इट माई ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार रिकैप कर लेते कल क्लास में क्या क्या पढ़ रहे थे अपन इन आवर लास्ट क्लास। तो दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर नंबर 2 कंपाइलर डिज़ाइन। तो लास्ट लेक्चर में अपन इंट्रोडक्शन पार्ट, लेक्सिकल एनालिसिस पार्ट कंप्लीट कर रहे थे ना। एक बार रिकैप कर लेते व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन आवर लास्ट क्लास। सो लास्ट क्लास में वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर, और वी कैन से सिंपली ऑल फेजेस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर में कितना फेजेस होता है, कितना सब प्रोग्राम्स होता है, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ ईच ऑफ द फेज ऑफ द कंपाइलर, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। ठीक है, देन लेक्सिकल एनालिसिस। We have started discussing lexical analysis phase of compiler. लेक्सिकल एनालिसिस फेज में मेनली टू टाइप ऑफ थिंग्स रहेगा, मेजर थिंग्स। नॉर्मल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर देखें तो आप टू थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। वन इज नंबर ऑफ टोकन्स डिटेक्शन। आपका प्रोग्राम में कितना नंबर ऑफ टोकन्स होता है, दैट इज द फर्स्ट वन। देन वन लेक्सिकल एरर्स। Lexical errors, okay? So this is what we have discussed. तो number of tokens कैसा होता है, token meaning क्या है, what are the tokens, all 5 type of tokens देखे थे ना, keywords, identifiers, operators, constants, special symbol। तो token detection में क्या क्या challenge है, operator tokens है, तो increment operator, addition operator, so arithmetic operator, एक ऐसा अलग अलग से कैसा डिटेक्ट करना है, number of token किसका कितना number of token प्रोड्यूस करना है, वो पूरा लास्ट क्लास में देखे थे। एंड देन व्हेन विल गेट लेक्सिकल एरर, आपको लेक्सिकल एरर कब आएगा, सो इन व्हाट केस लेक्सिकल एरर्स आर कमिंग, व्हाट कंपाइल टाइम एरर हो सकता है, वो सिंटैक्स सिमेंटिक, बट वो लेक्सिकल है कि नहीं कैसा देखना है वो पूरा देखे थे अपन लास्ट क्लास में। टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड फेज, सिंटैक्स एनालिसिस। So the majority of the errors यहीं पे आइडेंटिफाई करेगा, सिंटैक्स एनालिसिस फेज ऑफ द कंपाइलर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन इसी को अपन पार्सिंग भी बोल सकते हैं, पार्सिंग। ओके, तो यहाँ पे अपन पार्सिंग सिंटैक्स एनालिसिस, पार्सिंग कॉन्सेप्ट का नाम है, तो प्रोग्राम का नाम सिंटैक्स एनालाइजर और सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, एंड देन हियर वी आर डिस्कसिंग मेनली ऑन ग्रामर्स। पूरा यहाँ से है ना ग्रामर्स कॉन्सेप्ट चलते रहेगा। ओके, so the major topic here is grammars here. So these are the topics we are going to cover. Okay, so good morning everyone, good morning. So these are the topics. Good morning all. एक बार once again ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको, कंफर्म कर दीजिए so that we can start now. सिंटैक्स एनालिसिस स्टार्ट कर लेते। ऑडियो वीडियो इज इट एवरीथिंग क्लियर? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो लास्ट क्लास में अपन नाउ विल मूव विथ अवर टॉपिक हियर। सो लास्ट क्लास में लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर,
lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, code optimizer, target code generation, all this we have seen. Okay, the drawback of lexical analysis क्या होता है? Lexical analysis, what is the output of lexical analysis? Lexical analysis का input token high level language है. Input is high level language. What is the output here? Output is tokens. Tokens. The main purpose is, कल क्लास में पूरा देखे थे पूरा functionality कैसा है इसका and how errors are detected. Errors detection कैसा होता है इसमें. It is, इसका मेन पर्पस है लेक्सिकल एरर्स डिटेक्ट करने का. वी आर गोइंग टू डिटेक्ट लेक्सिकल एरर्स. अगर आप लेक्सिकल एरर्स को डिटेक्ट करना है, लेक्सिकल एरर्स को डिटेक्ट करना है तो टोकन्स प्रोड्यूस करना है. टोकन्स, अगर टोकन प्रोड्यूस नहीं होता है, दैट्स वाई द आउटपुट इज फॉर स्ट्रिंग वैलिड है, वैलिड इनपुट, सो टोकन्स आउटपुट आ जाएगा. अगर आपको इसमें कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में इनवैलिडिटी है तो टोकन नहीं है, लेक्सिकल एरर प्रोड्यूस करेगा. दैट्स वाई फॉर वैलिड इनपुट टोकन्स आउटपुट, इनवैलिड इनपुट सीक्वेंस लेक्सिकल एरर इज आउटपुट लाइक दिस. बट द प्रॉब्लम इज, ड्रॉबैक क्या है लेक्सिकल एनालिसिस में? ड्रॉबैक इज ये ओनली लेक्सिकल एरर्स को कैच करेगा, कैच कर सकता है. सो कंपाइल टाइम एरर्स, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर्स है तो लेक्सिकल एनालिसिस डोंट हैव द कैपेसिटी, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन में उसमें जस्ट में फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करके इम्प्लीमेंट करे थे अपन. फाइनाइट ऑटोमेटा इज जस्ट अ स्ट्रिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट. बट प्रोग्राम्स में नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द एरर्स देखे तो आप, मेजर एरर्स दे आर सिंटैक्स एरर्स होता है. मोस्ट ऑफ कोई भी प्रोग्राम में है ना, कंपाइल करें अपन, एरर्स दिख रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द एरर्स आर सिंटैक्स एरर्स. तो सिंटैक्स एरर्स लेक्सिकल एनालिसिस डोंट हैव कैपेसिटी. दैट्स वाई तो टोकन्स जो है, tokens will be given to the next one, that is syntax analyzer program, syntax analysis phase. Now syntax analyzer takes tokens as input. Syntax analysis क्या करता है? Tokens input लेके and it will produce parse tree as the output. So ये पूरा translation के inside what it is doing here is, good morning everyone, good morning. Tokens input लेके parse tree output पर के, the main purpose of doing this is detection of syntax errors. Syntax errors. Okay, right. So the input to the syntax analyzer क्या होता है? Tokens. Normally tokens, but one more input भी है. तो वो input होता है दूसरा context free grammars, CFGs, context free grammars. That's why so syntax analyzer takes these two things, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स एंड टोकन्स, दोनों कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स एंड टोकन्स दोनों इनपुट्स लेके प्रोड्यूसेस पार्स ट्री एज द आउटपुट. इट विल प्रोड्यूस पार्स ट्री एज द आउटपुट. ये प्रोसेस में अगर आपको किधर भी मिस्टेक्स लग रहा है, देन आई विल एक्सप्लेन वेयर इट विल, व्हाट इज सिंटैक्स एरर, वो कैसा आएगा. बट इफ अनेबल टू प्रोड्यूस पार्स ट्री प्रोड्यूस करने आउट, देखो किधर भी प्रोग्राम सेम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, एरर जनरेट हो जाएगा. इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस दिस पार्स ट्रीज फ्रॉम ग्रामर से. ओके, देन सिंटैक्स एरर्स विल बी जनरेटेड. अगर पार्स ट्री आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, पार्स ट्री आ रहा है, नो सिंटैक्स एरर. पार्स ट्री जनरेट में प्रॉब्लम हो रहा है, सिंटैक्स एरर. लेक्सिकल एनालाइजर कैसा, टोकन्स आ रहा है, नो एरर. टोकन्स नहीं आ रहा है, लेक्सिकल एरर. लाइक दिस हियर आल्सो सेम थिंग. ओके, सो यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस में इनपुट्स क्या है? इनपुट्स आर कॉन्टेक्स्ट फ्री tokens as well as context free grammars, CFGs. Output is parse tree or syntax. तो अपन ग्रामर का बारे में पढ़ना है, यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस डिजाइन करना है, तो यू शुड नो, यू हैव टू डेवलप ग्रामर्स डेवलप करना है फर्स्ट थिंग. देन टोकन्स तो है अपने पास ऑलरेडी, टोकन्स ऑलरेडी है, लेक्सिकल एनालाइजर दे दिया है, तो वी हैव टू डिजाइन ग्रामर्स. देन ये पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए ये इंटरनल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पार्सिंग. सो कल लेक्सिकल एनालाइजर डिजाइन करने के लिए अपन एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, फाइनाइट ऑटोमेटा कॉन्सेप्ट. ऐसा यहाँ पे पार्सिंग बोल के कॉन्सेप्ट है, ग्रामर्स का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यूज करके अपन सिंटैक्स एनालिसिस डिजाइन करेंगे. ओके, दैट्स व्हाई इन टुडेज क्लास ये ग्रामर्स क्या होता है, व्हाट इज अ ग्रामर, व्हाट इज पार्सिंग, ये पार्सिंग यूज करके, ग्रामर्स यूज करके सिंटैक्स एनालाइजर डेवलपमेंट क्या है,
उसमें टू टाइप ऑफ डिजाइनिंग्स होता है, टॉप डाउन वे ऑफ डिजाइनिंग, बॉटम अप वे ऑफ डिजाइनिंग. ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. ओके, क्लियर? सो कंपाइलर में बिगेस्ट फेस, मेजॉरिटी ऑफ द एरर्स मान लो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द एरर्स डिटेक्टेड फेस इज दिस वन. थोड़ा लेंथी फेस भी है. yes, bottom up approach, top down approach of parsing. Okay, ठीक है. तो चलो, ये थोड़ा पूरा कंपाइलर में है ना, ज़्यादा एरर्स कैच करने वाला फेज यही है. क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाला एग्जाम्स में भी यहाँ से है. और मोस्ट ऑफ टाइम टेकिंग वन, डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए टाइम टेकिंग है. तो दिस इज़ द समवट कॉम्प्लेक्स. तो डिफ़िकल्टी नहीं है डिज़ाइनिंग में, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, स्टैंडर्ड मेथड्स है. तो पार्सिंग कॉन्सेप्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज. यस, दिस इज़ डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये दिस इज़ द लीडर एक्चुअली, इसको लीडर बोल सकते हैं आप. इसका गाइडेंस में नेक्स्ट फेज थर्ड वन ये भी चलेगा और नेक्स्ट का ये भी चलेगा. दैट्स वाई अगर आप पार्सिंग अच्छा से आ गए ना, सिंटैक्स एनालाइजर अच्छा समझ में आ गया, नेक्स्ट सिमेंटिक एनालिसिस ईजी होता है. इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, वो भी यहाँ पे भी पार्सिंग करते हैं, यहाँ पे भी पार्सिंग करते हैं अपन. सो दैट्स वाई पार्सिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सिंटैक्स एनालिसिस इज मोस्ट. ठीक है, ये सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ऑल दिस विल स्लोली विल स्टार्ट. देन ये ग्रामर्स क्या होता है, वन बाय वन टर्मिनोलॉजी से एक एक क्लियर करके जाएंगे. See these terminologies. अपन यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस बोल रहा है. फर्स्ट, व्हाट इज सिंटैक्स? सो बिफोर दिस, अगर कोई भी है ना, इफ एनी ऑफ यू वांट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, देखो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में पूरा अपडेट्स, अभी एग्जाम इस बार लिख रहे हैं तो क्वेश्चंस पोस्टिंग, अपडेट्स, कोई भी एग्ज़ाम्स का आपका अपडेट, सारा एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये पूरा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन कर लो. तो रिगार्डिंग कंपाइलर डिज़ाइन एंड थियरी ऑफ कॉम्पिटिशन एंड मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ वो सब्जेक्ट्स का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहता है. ठीक है, इफ एनीबडी नॉट देयर इन दिस चैनल यू कैन ज्वाइन हियर, यहाँ पे ज्वाइन कर लो. तो रिलेटिव कोई भी नया नोटिफिकेशन आ गया इसमें पोस्ट करेंगे. कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स का, नियर बाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो सॉल्व करने के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजीज, वो पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कभी कभी इसमें ना लाइव भी आके डिस्कस करता हूँ मैं. तो आप क्वेश्चंस भी पूछ, आई विल बी इन टच विथ यू यूजिंग दिस. ओके, राइट. तो आप कोई भी इसके बाद डाउट्स पूछना है. कंपाइलर में क्या है, नॉर्मली आप सॉल्व करने के टाइम में बहुत सारे डाउट्स होने का चांसेस होता है. तो टेक दिस ग्रुप एंड ज्वाइन हियर, यू कैन बी इन टच विथ मी. राइट. ठीक है, चलो चलते सिंटैक्स एनालिसिस. तो नाम देखो, ये नाम तो बहुत आप सुन रहे होंगे बहुत दिन से. कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो, देन सी लैंग्वेज, स्टार्टिंग सी लैंग्वेज सीखने में कैसा, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट का सिंटैक्स पढ़ो. फर्स्ट सिंटैक्स, व्हाट इज द सिंटैक्स. फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है. सो विल स्टडी सिंटैक्स. सिंटैक्स का मतलब क्या है, सिंटैक्स इज नथिंग बट स्ट्रक्चर. तो कंपाइलर क्या कर रहा है यहाँ पे, सिंटैक्स एनालिसिस कर रहा है. फिर सिंटैक्स क्या है, द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स नोन एज सिंटैक्स. अगर मान लो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इंट ए बी सेमीकोलन, दिस इज द सिंटैक्स. फर्स्ट टाइप होना चाहिए, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, वन वेरिएबल कॉमा, सेकंड वेरिएबल कॉमा, थर्ड, एट द लास्ट सेमीकोलन. ये इसका स्ट्रक्चर है.
यहाँ पे स्ट्रक्चर इज अ जनरल वर्ड, वो नेचुरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, कंपाइलर में टर्मिनोलॉजीज पूरा अलग अलग रहता है, सो नेचुरल लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज नहीं, दैट्स वाई. सो हियर इट इज क्लियरली दिस इज कॉल्ड एज सिंटैक्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स नोन एज सिंटैक्स. ठीक है, ये सिंटैक्स एनालिसिस मीन्स सिंटैक्स प्रॉपर है कि नहीं, सिंटैक्स प्रॉपर है कि नहीं वो देखना है अपन. ओके, फॉर स्टेटमेंट, प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट, स्कैन ऑफ स्टेटमेंट, स्कैन ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं, प्रिंट ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं, प्रॉपरली है कि नहीं. सो स्ट्रक्चर बोलने से भी सिंटैक्स, तो एक्सप्रेशन सिंटैक्स क्लियर है कि नहीं, डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्लियर है कि नहीं, इफ एल्स स्टेटमेंट सिंटैक्स क्लियर है कि नहीं, दिस वेरिफिकेशन वी आर डूइंग हियर. ओके, ठीक है, ये वेरिफिकेशन करने के लिए अगर आप प्रोग्राम डेवलप करना है तो वो प्रोग्राम में अपन वी वांट टू यूज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पार्सिंग. पार्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करना है. पार्सिंग इज नॉट ए कंपाइलर डिजाइन में इसका नहीं है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्रामर्स. ग्रामर्स का एक कॉन्सेप्ट है. ओके, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लेते. देखो कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम, बाहर कॉन्सेप्ट्स जो है वो यूज करके अपन डेवलप करते हैं अपना रिक्वायरमेंट के लिए. कल क्लास में फाइनाइट ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर लिए. लाइक दिस पार्सिंग आल्सो कॉन्सेप्ट फ्रॉम ग्रामर्स. पार्सिंग क्या है, व्हाट इज द पार्सिंग हियर? चेकिंग, यहाँ पे अपन को सिंटैक्स एनालिसिस इज लाइक दिस. इनपुट इसको दैट्स व्हाई सिंटैक्स एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एज पार्सर. इसका अदर नाम है पार्सर, पार्सर भी बोलते हैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इनसाइड यूज्ड इज पार्सिंग ओनली. पार्सिंग यूज करके प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, वो प्रोग्राम का नाम पार्सर भी बोलते, सिंटैक्स एनालाइजर भी बोलते. आई विल कॉल पार्सर नाउ. व्हाट इज द इनपुट टू द पार्सर्स? एक तो हो गया टोकन्स, वन इज टोकन्स, अदर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, इट टेक्स टू इनपुट्स, प्रोड्यूसेस आउटपुट एज पार्स्ड. ठीक है, ये टू इनपुट्स लेके क्या करेगा इनसाइड? इनसाइड इट इज डूइंग पार्सिंग. इट इज डूइंग पार्सिंग. व्हाट इज द पार्सिंग हियर? पार्सिंग इज नथिंग बट चेकिंग given string is member of given grammar or not, known as parsing. Checking given string is member of given grammar or not. तो एक स्ट्रिंग है, पार्सिंग पूरा देखो, पार्सिंग है ना, टॉप डाउन पार्सिंग्स, बॉटम अप पार्सिंग्स, वो पार्सिंग बहुत सारे पार्सिंग करते हैं यहाँ पे. पार्सिंग का मतलब बहुत सिंपल है. एक ग्रामर होता है, गिवन ग्रामर इज member of given string is member of given grammar or not. String is member of given grammar or not. मैं simply आपको यहाँ पे I'll explain here. तो मैं ग्रामर ले रहा हूँ यहाँ पे. This is a grammar and this is my input string AB. Now you tell me AB member means generated or not. member का मतलब होता है generated string. All of you tell me ये string ये grammar से generate हो रहा कि नहीं? This string is generated from this grammar or not? This string is generated from this grammar or not? ये ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट होगा कि नहीं? तो आप सभी लोग बोल रहा है ये जनरेट हो रहा है, दैट इज पार्सिंग. आप पार्सिंग ही कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग इज पार्सिंग. सो पार्सिंग इज नथिंग बट सो मेंबरशिप चेकिंग, दिस स्ट्रिंग इज मेंबर ऑफ दिस ग्रामर और नॉट. आप बोल रहे ना स्ट्रिंग एक ग्रामर का मेंबर है, सो यू आर डूइंग पार्सिंग हियर. तो पार्सिंग वही है, पार्सिंग कोई दूसरा नहीं. सो पार्सिंग इज नथिंग बट एक ग्रामर होता है स्ट्रिंग. तो हियर टोकन्स आर नथिंग बट आवर स्ट्रिंग्स. टोकन स्ट्रिंग्स है, ग्रामर्स है, टोकन्स आर मेंबर्स और नॉट. ये वेरिफिकेशन करता है पार्सर. ये टोकन्स, ग्रामर्स क्या है? ग्रामर्स आर नथिंग बट रूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स. तो कंपाइलर को आप कुछ भी रूल बोलना है, कैसा बात करेंगे यहाँ से पार्सिंग में? विल इफ यू वांट टू इन्फॉर्म एनीथिंग टू द कंपाइलर, ओनली वे इज ग्रामर्स. थ्रू वी कैन इन्फॉर्म. दैट मीन्स ग्रामर्स एक रूल्स है, रूल्स
इम्प्लीमेंट करते ग्रामर्स में। तो ये रूल्स है, ये टोकन्स है। टोकन्स आर यू एज पर दीज रूल्स और नॉट, टोकन्स मेंबर्स ऑफ द ग्रामर और नॉट, वो चेक करने वाला प्रोग्राम है ये। ओके, so that's why this concept is called as parsing, that's why this program is also called as parser। okay, तो that's why इसमें टू टाइप ऑफ पार्सर्स होता है, टॉप डाउन पार्सर्स, बॉटम अप पार्सर्स, बिकॉज ये पार्सिंग मेथड्स जो है टॉप डाउन बॉटम अप ऐसा टू एल्गोरिथम्स है, देखेंगे। ओके, बट एनी हाउ पार्सिंग इज दिस वन, ठीक है। सो द पार्सर प्रोग्राम, व्हाट इज सिंटैक्स एनालाइजर नो, ये सिंटैक्स एनालाइजर क्या है? इट इज अ प्रोग्राम that takes tokens and CFG as input, and tokens are members or not. It simply verifies tokens are members or not. Tokens are members. Parser produces parse tree as output. That's all. अगर ये members है, parse tree output. Members नहीं है, otherwise syntax error, that's why outputs are members के लिए parse tree output, other case syntax error। that's why syntax analyzer जो है parsing कर रहा है, syntax analyzer वो lexical analyzer क्या है? lexical analyzer is string matching, finite automata है, on string लेते tokens, automata rules रहेगा, this string as per the automata or not, that is string matching concept, this is parsing concept, that's all, the concepts inside is this one। so that's why parser or syntax analyzer is, it's a program that takes tokens and context free grammar as input, and tokens are members or not. If tokens are members, parser produces parse tree as output, tokens are members, parse tree as output, otherwise syntax error is the output, that's all। okay, that's why अपन ये parsing क्या है पढ़ना है, तो ये पूरा आप सीखना है, तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द ग्रामर्स। तो अभी अपन स्टार्टिंग में एक हाफ एन आवर ग्रामर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ग्रामर्स क्या होता है, एम्बिगुअस ग्रामर्स क्या होता है एंड ऑल दिस, देन वी हैव पार्सिंग एल्गोरिथम्स। सो मेनली यू हैव टू लर्न टू थिंग्स हियर। अगर आप ये फेज जो है अच्छे से सीखना है तो यू शुड नो अबाउट ग्रामर्स प्रॉपरली, ग्रामर्स के बारे में, देन पार्सिंग एल्गोरिथम्स। ये ग्रामर्स जो है आई थिंक थियरी ऑफ कॉम्पिटिशन कॉन्सेप्ट है, तो थियरी ऑफ कॉम्पिटिशन में ग्रामर का इंट्रोडक्शन पूरा है। तो मैं रफली है ना यहाँ पे कंपाइलर में जो चाहिए वो इतना लेता हूँ, ओनली वील यूज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हियर मोस्टली। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का इन्फॉर्मेशन लेते अपन, विल डिस्कस फ्यू मिनट्स अबाउट ग्रामर्स, देन आई विल कम टू द पार्सिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। सो इज इट क्लियर अबाउट ऑल दिस? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Right, what is a grammar here? Grammars is nothing but set of rules। यहाँ पे grammars are nothing but set of rules। so आपका यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट का ग्रामर्स बनाना है। देखो आप कोई भी सी लैंग्वेज पढ़े होंगे ना, हैव यू सीन द सी लैंग्वेज ग्रामर? देखे आप लोग कोई भी सी लैंग्वेज का ग्रामर देखे? कभी आप लैंग्वेज बोलते ना, लैंग्वेज फॉलोड बाय ग्रामर, हर एक लैंग्वेज। देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या है? सब्जेक्ट्स, वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, ऐसा बहुत आप बचपन से पढ़ रहे हो। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी का ग्रामर है कर्ता, कर्मा, क्रिया, संज्ञा, ऐसा बहुत है। ओके, लाइक दिस कंप्यूटर साइंस इज फुल ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पे द मोमेंट यू ज्वाइन इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सो सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, so Python, C++, that language, so many, full of language। तो language बोल के कभी term सुने, उसका grammar होता है। The grammar will be there for this, okay? So what is the grammar here? So that we will see here। Grammar is nothing but simply
Grammar derives strings by beginning with the start symbol and repeatedly. Grammar is nothing but simply set of rules. अगर आप simply देखना है तो इसको set of rules. यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में ये सी लैंग्वेज ये ग्रामर देखे तो अपन को नाउन्स प्रोनाउंस ये पूरा नहीं दिखता है. Simply every grammar is collection of just a 4 tuple. So non-terminals, sigma terminals, P productions, S is starting symbol. Every grammar is collection of, simply देखो, sigma is set of terminals, finite set of non-terminals, finite subset of production rules, S is starting symbol. Grammar notation simply होता है. Let me give an example. All grammars is of the form alpha derives beta. यहाँ पे है ना, grammar is collection of 4 things. Non-terminals, terminals, production, starting symbol. ये 4 टाइप collection. यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस में grammars यूज होता है वो इतना ही है, इससे अलावा कुछ नहीं रहेगा. तो यहाँ पे ऑल ग्रामर्स फॉर्मेट क्या है, एक एरो रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड समथिंग, राइट हैंड साइड समथिंग, इट विल गिव द इक्वल मीनिंग. तो एरो का मीनिंग है इक्वल. दैट मीन्स आप अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं और बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द पार्सिंग. तो ये पार्सिंग में इतना क्यों है, टॉप डाउन पार्सिंग अल्फा को बीटा से रिप्लेस करता हूँ. सो ये लेफ्ट हैंड वाला को राइट साइड से रिप्लेस, बिकॉज दोनों इक्वल है. तो इतना पार्सिंग मेथड्स क्यों आ रहा है, द वे यू आर डूइंग ग्रामर्स कॉन्सेप्ट. पार्सिंग पूरा ग्रामर्स कॉन्सेप्ट है. तो ग्रामर्स में डेरिवेशन 2 वेज में होता है, दैट्स वाई यहाँ पे भी सेम. सो अल्फा कैन बी रिप्लेस्ड बाय बीटा, बीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा, बोथ आर गिविंग इक्वल मीनिंग. तो वो आप कैसा कर रहा है, सम डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. वो टॉप डाउन पार्सर में विल यूज सम टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट्स, बॉटम अप पार्सर में विल यूज सम टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट्स, बट एनी हाउ giving same meaning. ठीक है. So here we'll call as derivation, concept called as derivation. These replacements are called as derivation. Derivation is for the purpose of bringing strings from the grammar. That's why this, see here, a grammar derives strings by beginning with the start symbol, repeatedly replacing non-terminal by right hand side of the production for that non-terminal. ओके राइट. तो ग्रामर्स कैसा दिखता है आपको, एग्जाम्पल आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑफ ग्रामर. एरोस, ऑल द एरोस है, लेफ्ट हैंड साइड समथिंग रहेगा, राइट हैंड साइड समथिंग. So this is every grammar is collection of these things, non-terminals, ये 4 ही रहेगा ग्रामर में, इसके अलावा कुछ नहीं. starting symbol, starting symbol. okay. तो all of you tell me, ये ग्रामर, अगर ग्रामर ऐसा है, what are the non-terminals present in this grammar? ये ग्रामर में कौन सा non-terminals है, which non-terminals present in this grammar? सो जनरली है ना, अगर ग्रामर बहुत सिंपल में दिख रहा है तो नॉन टर्मिनल्स आर नथिंग बट कैपिटल सिंबल्स, कैपिटल लेटर्स जो होता है, दोज आर अवर नॉन टर्मिनल्स. सो एज पर दिस नॉन टर्मिनल्स ऑफ दिस ग्रामर विल बी एस, ए, बी, सी. दीज आर नॉन टर्मिनल्स. व्हाट आर द टर्मिनल्स? यस, वेरी गुड. टर्मिनल्स आर इन जनरल स्मॉल लेटर्स है. नहीं देखो, वेरी सिंपल. कोई भी नॉर्मल ग्रामर्स में है ना, और टोकन्स जो है, प्रीवियस लेक्सिकल टोकन्स आर नथिंग बट टर्मिनल्स. यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर्स है, ए बी डी. सो दिस आइडेंटिफायर्स बिकम्स
terminals here. So here terminals are nothing but simply tokens. Productions. Can you tell me how many productions present in this grammar? ये grammar में कितना productions है? तो ऐसा एनटीपीएस एनालिसिस करना आना है अपन को. एनटीपीएस ये आने से बाद में यूजिंग दिस ओनली वी कैन एबल टू कंस्ट्रक्ट डेरिवेशंस, पार्स ट्रीज एंड ऑल दिस. एरोस, कितना एरोस है उतना प्रोडक्शन. 1 2 3 4. सो number of productions are 4 productions here, 4 productions. and starting symbol. तो ग्रामर में फर्स्ट पोजीशन में जो सिंबल है, वॉट एवर इज देयर इन द फर्स्ट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज तो स्टार्टिंग सिंबल. so S is called as starting symbol here. S is the starting symbol. फर्स्ट में जो रहता है वही स्टार्टिंग सिंबल है. This is the NTPS analysis. Okay. So now I'll give one more example. दिस इज द ग्रामर. ये ग्रामर है. इसमें एनालिसिस करेंगे नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन, स्टार्टिंग सिंबल एस. ओके, राइट. तो व्हाट आर द नॉन टर्मिनल्स ऑफ दिस ग्रामर. ये ग्रामर नॉर्मली अपना है ना, टोकन्स पूरा रहेगा इसमें. टोकन्स, इंट, फ्लोट, कैर, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर, सब कुछ रहेगा यहाँ पे. स्पेशल सिंबल्स, एवरीथिंग कैन बी देयर हियर. ओके. तो व्हाट आर द टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स ऑफ दिस ग्रामर. ये ग्रामर का नॉन टर्मिनल्स क्या है. नॉन टर्मिनल्स देखो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है. अगर आप सिंपली आइडेंटिफाई करना है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में, ये लेफ्ट हैंड साइड में जितना है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो पूरा नॉन टर्मिनल्स होता है. बिकॉज दिस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में ऑल द नॉन टर्मिनल्स शुड प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में जरूर रहेगा वो. दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड पार्ट देखो, ग्रामर का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट. सो STDI, नॉन टर्मिनल्स. कैन यू टेल मी व्हाट आर द टर्मिनल्स ऑफ दिस ग्रामर. टर्मिनल्स क्या हो सकता है. नॉर्मली आप सिंपल ग्रामर्स देखे होंगे, बट कंपाइलर में है ना ये पूरा ग्रामर स्ट्रक्चर्स. ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का ग्रामर है. डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होता है ना उसका ग्रामर. यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट का ग्रामर होता है. डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट. ओके. टोकन्स. ओके. तो यहाँ पे इंट एक टर्मिनल है. दिस इज अ टर्मिनल. इंट इज अ टर्मिनल. तो फ्लोट टर्मिनल है. ठीक है. एंड देन ये बी. यहाँ पे और एक है देखो, ये स्पेशल सिंबल है ना, कामा. दिस इज आल्सो टोकन. सो ये है सेपरेटली. दिस इज आल्सो ए टोकन हियर. सो टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स आर 5 टर्मिनल्स हियर. ये भी एक टोकन है. 5 टर्मिनल्स. ओके. हाउ मेनी प्रोडक्शंस. सो दिस और इंडिकेट्स, यहाँ पे जो और है ना, और इंडिकेट्स मल्टीपल प्रोडक्शंस. सो टोटल 2 प्रोडक्शंस है यहाँ पे. दिस इज और. तो हाउ मेनी प्रोडक्शंस प्रेजेंट इन दिस ग्रामर.
How many productions present in this grammar? Number of productions. Number of productions are, so यहाँ पे this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 productions. S is the starting symbol. Okay, right. Clear है? So grammar analysis. तो grammar ऐसा दिखता है यहाँ पे अपन को. तो कभी अपन टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे हो, बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हो, यू शुड नो अबाउट दिस ग्रामर स्ट्रक्चर. देन वी विल गो फॉर डेरिवेशन. और पार्स ट्री. डेरिवेशन और पार्स ट्री. तो आउटपुट ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस पार्स ट्री बोल रहे हैं ना. व्हाट इज दिस पार्स ट्री हियर? ये पार्स ट्री क्या होता है? पार्स ट्री इज नथिंग बट सिंपली जनरेटिंग स्ट्रिंग्स फ्रॉम द ग्रामर. ग्रामर से स्ट्रिंग्स जनरेट करने का प्रोसेस है. सो द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग स्ट्रिंग्स फ्रॉम गिवन ग्रामर. सो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में है ना, ए ग्रामर डिराइव स्ट्रिंग्स बाय बिगिनिंग एट द स्टार्टिंग सिंबल, repeatedly replacing a non-terminal by its right hand side part. This is called as derivation. Okay, इसको derivation बोलते हैं. So we have some examples here previously. If I want to apply derivation or parse tree here, यहाँ पे derivation, parse tree is nothing but derivation. Parse tree कुछ नहीं, derivation होता है. Parse tree is simply a derivation here. So I want to construct parse tree for this. इसके लिए parse tree डिजाइन करना है. What is the parse tree? Start at the starting symbol S. So this S is replaced by A, B, C. So every non-terminal replaced by its right side. So A is replaced by A, B is replaced by B. Left hand side non-terminal replaced by its right side. So this structure is called as parse tree. That means how a string is generated. ये जो string है A, B, D, how it is generating from this tree structure. So this is called as parse tree here. Okay. So parse tree is nothing but just a non-terminal replacements. So वो process जो है starting symbol से start करेंगे. Start at the starting symbol. Every non-terminal replaced by its right side. Every non-terminal. A is replaced by A. S is replaced by A, B, C. A replaced by A. B replaced by B. This total structure is called as parse tree. So parse tree is nothing but the process of deriving strings from given grammar. ठीक है? Right. Because of this parse trees, because of multiple parse trees, we will have some special type of grammars called as ambiguous grammars. Ambiguous grammars, ये जो ग्रामर्स में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में अपन को 2 वेराइटीज ऑफ ग्रामर्स रहेगा. एम्बिगुअस ग्रामर्स, नॉट एम्बिगुअस ग्रामर्स. एम्बिगुअस ग्रामर्स का प्रॉब्लम क्या है? एम्बिगुअस ग्रामर्स इतना स्पेशलिटी क्या है, क्यों इतना पढ़ते? अगर आपका ग्रामर एम्बिगुअस है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर आवर पार्सिंग कॉन्सेप्ट. तो वो एम्बिगुअस ग्रामर लेके आप टॉप डाउन पार्सर नहीं बना पाएंगे, बॉटम अप पार्सर नहीं बना पाएंगे. Okay, so by taking that those ambiguous grammars, we cannot construct top-down parsers. Parsing syntax analyzer, parser डिजाइन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये ग्रामर्स. दिस ग्रामर्स आर कॉल्ड एज ambiguous grammars. So that's why आप ग्रामर्स को डिजाइन करने के बाद ग्रामर्स को चेक करना है ये ग्रामर्स ambiguous है कि नहीं. तो गेट में भी क्वेश्चन देते, लास्ट ईयर गेट में भी दिए थे 2 मार्क क्वेश्चन. 2 मार्क क्वेश्चन दिए थे. कौन सा ग्रामर से एम्बिगुअस है? एम्बिगुअस ग्रामर्स को इतना एडवांटेज क्यों है? बिकॉज अगर ग्रामर एम्बिगुअस हो गया, दैट ग्रामर इज नॉट सूटेबल फॉर आवर पार्सर. अगर आप टॉप डाउन पार्सर ले लो,
लॉट ऑफ कन्फ्यूजन मल्टीपल एंट्रीज टेबल्स में. बॉटम अप पार्सर ले लो, कॉन्फ्लिक्ट, शिफ्ट रेड्यूस, कॉन्फ्लिक्ट रेड्यूस, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ऐसा ग्रामर्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट करके विल रिमूव दिस इज नॉट सूटेबल फॉर माई पार्सर बोल के. सो what is the ambiguous grammar? Ambiguous grammar is for at least one string more than one parse to exist. One string more than one parse tree. So ambiguous grammars means a grammar is said to be ambiguous. कोई भी ग्रामर ambiguous है for at least कोई भी एक string के लिए more than one parse tree आ रहा है. So at least one string sufficient. वो multiple string भी हो सकता है, but अपन prove करने के लिए one string sufficient. For at least one string more than one parse tree exists, such type of grammars are called as ambiguous grammars. I'll give some example here. Okay, this is the grammar I have, and I want to generate the for this. For this input, one parse tree. Just a minute. So for this input string, ये जो input string है n plus n star n, ये grammar से generate होगा. This is the input string. For this, we have more than one tree structure. So more than one parse tree structure. This is one tree structure we have, and this is one tree structure we have. Same देखो लीफ नोड्स बोलते हैं. लीफ नोड्स देखो n plus n star n, यहाँ पे n plus n star n. So these two structures are for the same string के लिए different, same but different structures. Same string के लिए different structures. तो ऐसा होने से for the same input different tree structures, more than 1, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है. What is the problem here? These type of grammars are called as ambiguous. What is the problem? Each tree will give different meaning. हर एक ट्री different meaning देता है. So every tree will give different meaning, different tree structure. Yes, output should be same. तो ये n plus n star n string same है, string same. यहाँ पे देखो इसका left child grow हो रहा है, यहाँ पे देखो इसका right child में ज़्यादा edges से right child grow हो रहा है. That's why for the same string different tree structures. This is ambiguous grammar. What is the problem? Each tree will give different meaning. ठीक है. यहाँ पे ऑपरेटर्स है ना, तो नॉर्मली ऑपरेटर्स है तो ट्री स्ट्रक्चर्स में, कोई भी ट्री स्ट्रक्चर में बॉटम लेवल ऑपरेटर्स, बॉटम में जो ऑपरेटर्स होता है, बॉटम लेवल ऑपरेटर्स हायर प्रेसिडेंस, बॉटम लेवल ऑपरेटर्स हायर प्रेसिडेंस, टॉप लेवल ऑपरेटर्स लीस्ट प्रेसिडेंस होता है. दिस इज द वे. तो यहाँ पे आउट ऑफ प्लस एंड स्टार, ये ट्री स्ट्रक्चर अगर है, आप ये ट्री स्ट्रक्चर से एनालिसिस करो, प्लस एंड स्टार में कौन सा हायर प्रेसिडेंस है, प्लस और स्टार में कौन सा हायर प्रेसिडेंस है, ये एज पर दिस ट्री स्ट्रक्चर, प्लीज
ट्रेस देख के प्रेसिडेंसेस एनालिसिस करना है. दिस इज ऑल्सो पार्सिंग कॉन्सेप्ट ओनली. मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन. So whichever is in the lower levels, higher precedence, very good. So plus है ना, plus is in lower level, higher precedence, high. Star low है, यहाँ पे star low. So plus जो है ज़्यादा है star से. So as per this, if I want to evaluate this expression 2 plus 3 star 4, आप ये जो प्रेसिडेंसेस बोल रहे हैं ना, as per these precedences, अगर आप ये एक्सप्रेशन का वैल्यू एवेल्यूएट करें तो मेरा पार्स ट्री जो है ये है, मेरा सिंटैक्स एनालाइजर जो है ये पार्स ट्री प्रोड्यूस कर रहा है. एज पर दिस कंपाइलर विल टेक द मीनिंग. तो ये क्या मीनिंग लेता है, ये प्लस हायर है स्टार लोअर है, ठीक है. एज पर दिस इफ आई गिव माई इनपुट एज 2 plus 3 star 4, व्हाट आउटपुट आई विल गेट, टेल मी व्हाट इज आउटपुट. तो प्लस ज़्यादा है इसमें, कौन सा फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, so plus ज़्यादा है. so this higher precedence means this one execute first 5, then star 4, total 20 here, 20. ओके. सो आप ऐसा नहीं, आप सी प्रोग्रामिंग में कुछ स्टार हायर ऐसा पढ़े, वो दैट इज डिपेंड्स ऑन द ग्रामर, ठीक है. तो मान लो सेम इनपुट के लिए ये ट्री स्ट्रक्चर भी है ना अपने पास. Now tell me, as per this tree structure, out of star and plus, which is higher precedence? ये tree structure use करके plus में star में कौन सा higher precedence है? Out of plus and star, if you use this tree structure, ऐसा भी tree structure आ रहा है same input के लिए, विच इज़ अ हायर प्रेसिडेंस हियर. जो ऑपरेटर लिस्ट में होता है वही हायर प्रेसिडेंस होता है. टेल मी विच इज़ अ हायर प्रेसिडेंस हियर. ओके. सो हियर स्टार इज हाई, स्टार लो में है, हाई है, प्लस लो लीस्ट लेस. ये हाई प्रेसिडेंस है, ये लेस प्रेसिडेंस है, ठीक है. सो दिस इज अ हायर प्रेसिडेंस, ये हायर प्रेसिडेंस है, ये लेसर प्रेसिडेंस है. तो एज पर दिस इफ आई एवेल्यूएट दिस एक्सप्रेशन 2 plus 3 star 4, out of plus and star, star is higher precedence, plus is lesser precedence. तो if we evaluate this expression as per this, तो out of plus and star, star higher है. तो इसका expression का क्या value होता है, what is the value of this expression, now tell me. as per these values, ये precedence के according अगर आप expression evaluate करें क्या value आएगा. so that's why star higher है 12, then plus 2 14. okay, this is a problem here. देखो सेम एक्सप्रेशन है, ये ट्री स्ट्रक्चर गिविंग 20 आंसर, सेम एक्सप्रेशन है, ये ट्री स्ट्रक्चर गिविंग 14 आंसर. सो हियर दिस प्रॉब्लम. तो मान लो अगर आप ये एक्सप्रेशन दे रहा है, आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कंपाइलर डिज़ाइन कर दिए, वो कंपाइलर में ये पास आ रहा है, यू आर एक्सपेक्टिंग 14 बट कंपाइलर 20 दे रहा है, बिकॉज ये ट्री स्ट्रक्चर ले सकता है. ओके, समटाइम्स इट विल गिव अगेन 14. So this problem, multiple problem because of multiple tree structures. तो स्टार हायर है ना, यहाँ पे स्टार हायर है ये ट्री स्ट्रक्चर से, तो 12 आएगा, फर्स्ट स्टार एग्जीक्यूट होगा 12, देन प्लस 14. सो दिस ऐसा यहाँ पे क्योंकि ओके. तो वाई दिस टाइप ऑफ वैल्यूज वी आर गेटिंग, because of multiple tree structures, ये multiple tree structures है. तो what is the output of the parser, parse tree. तो सिंटैक्स एनालाइजर का आउटपुट क्या है, पार्स ट्री. वो पार्स ट्री यूनिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, देन करेक्ट आंसर्स आएगा. ऐसा मल्टीपल है तो डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग है तो
confusion. These type of grammars are called as ambiguous grammars. इसको ambiguous grammar बोलते हैं. ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है अपन को? ये प्रॉब्लम ये ग्रामर से हो रहा है. ये ग्रामर में ऐसा ट्री स्ट्रक्चर है. दैट्स वाई विल डिटेक्ट. सो पार्सर डिजाइन करने से पहला, सिंटैक्स एनालाइजर डिजाइन करने से पहला जो ग्रामर्स यूज करते वो ग्रामर्स एम्बिगस नहीं होना चाहिए. एम्बिगस है, रिमूव दिस. डोंट यूज दिस फॉर पार्सर डिजाइनिंग. इज इट क्लियर नाउ? तो ग्रामर्स में ऐसा एम्बिगस है कि नहीं देख लेना है. अगर ग्रामर एम्बिगस है, डोंट यूज दिस फॉर पार्सर डिजाइनिंग. वो पार्सर डिजाइनिंग के लिए यूजफुल नहीं होता है एम्बिगस ग्रामर्स. Is it clear? So this is the, तो ग्रामर कंस्ट्रक्ट करने के बाद ग्रामर कंस्ट्रक्शंस कर दे. ग्रामर कंस्ट्रक्शन करने के बाद पार्सर डिजाइन से पहला वो ग्रामर से एम्बिगस है कि नहीं देख लो. एम्बिगस ग्रामर्स आर नॉट गुड फॉर पार्सर डिजाइनिंग. सो विल चेक दिस एंड विल वेरीफाई दिस. विल रिमूव दिस एम्बिगस ग्रामर्स फ्रॉम पार्सर डिजाइनिंग. इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. पार्सर डिजाइनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. Okay, right. So next I will give one grammar here. कभी पार्सिंग से क्वेश्चन पूछते ना, मोस्ट ऑफ द टाइम देखे थे मैं एग्जाम्स में. देखो प्रीवियस पेपर्स में एम्बिग्यूटी रिलेटेड ग्रामर्स में पूछ रहा है ज़्यादा. दैट्स वाई ग्रामर में एम्बिग्यूटी है कि नहीं देखना है. ओके, सो वेरीफाई. Given grammar is ambiguous or not. Given grammar is ambiguous or not. ये ग्रामर ambiguous है कि नहीं? ओके, सो कोई भी एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट और नॉट. ग्रामर एम्बिगस और नॉट. तो एम्बिगस और नॉट मीन्स ये एम्बिगस है, पार्सिंग के लिए सूटेबल नहीं है. सो दैट मीन्स ये ग्रामर पार्सिंग के लिए सूटेबल है कि नहीं चेक कर रहा बोल रहा हूं मैं. तो कौन सा इनपुट के लिए है? एम्बिगस है तो कौन सा इनपुट के लिए हो रहा है? कौन सा इनपुट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये? सो आई विल गिव द इनपुट आल्सो. मान लो ए बी ले लो, तो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते. एक स्ट्रिंग लेके चेक करना है. तो ए बी के लिए. सो दिस इज वन टाइप ऑफ ट्री स्ट्रक्चर वी कैन कंस्ट्रक्ट हियर. See here, for AB input, दोनों सेम है डिफरेंट है. सो यहाँ पे इसका राइट चाइल्ड ग्रो हो रहा है, राइट साइड में ज़्यादा एडजस्ट है. यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड ग्रो हो रहा है.
डिफरेंट रिस्ट्रक्चर्स फॉर द सेम इनपुट डिफरेंट रिस्ट्रक्चर। अगर ये ग्रामर लेके अगर आप पार्सिंग करें तो देन ऑल्सो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई दिस ग्रामर इज नॉट suitable for parsing. This is also ambiguous grammar. हर एक बार ऑपरेटर्स होना बोल के जरूरी नहीं। ओके तो हर एक ग्रामर में कि कैसा चेक करना है, कौन सा इनपुट, देखो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके चेक करना है। 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग ऐसा चेक करना है। यहाँ पे कोई एल्गोरिथम नहीं है डायरेक्टली ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं बोलने वाला। दैट्स वाई यूज ट्रायल एंड एरर मेथड्स एंड वी विल वेरीफाई द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। ठीक है, दिस इज अबाउट एम्बिग्यूटी। विद दिस वी कैन स्टॉप दिस ग्रामर डिस्कशन। ऐसा ग्रामर्स चेक करके विल स्टार्ट पार्सिंग मेथड्स। Shall we start parsing methods now? पार्सिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? सो ग्रामर्स, तो पार्सर डिजाइन करना है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स लेना है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आर नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन स्टार्टिंग सिंबल स्ट्रक्चर वाला है। दैट इज टू इम्प्लीमेंट रूल्स। आप लैंग्वेज का जो रूल्स है वो रूल्स पूरा सिंटैक्स रूल्स जो है एवरी सिंटैक्स रूल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इम्प्लीमेंटेड होता है। ओके एवरी सिंटैक्स रूल, सिंटैक्स जो है वो रूल रिप्रेजेंट करना है, कंपाइलर को बोलना है तो ग्रामर इज अ बेस्ट सूटेबल नोटेशन। ग्रामर लिए, बट ग्रामर्स एवरी ग्रामर इज नॉट सूटेबल टू डिजाइन ए पार्सर। ग्रामर्स में एम्बिगुअस ग्रामर्स है नॉट सूटेबल, देन टेक अनएम्बिगुअस ग्रामर विच इज नॉट एम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस ग्रामर्स जो है उसी के लिए अपन पार्सर डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके गुड मॉर्निंग ऑल। स्ट्रिंग सेम रहेगा, एक ही स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट ट्री स्ट्रक्चर्स, एक ही स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट ट्री स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रिंग है, मल्टीपल पार्स ट्रीज, दैट इज कॉल्ड एज। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर प्लीज प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ अनएम्बिगुअस ग्रामर। ये ग्रामर देखो, ऑल ऑफ यू वेरीफाई दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। This grammar comes under ambiguous grammar or not? स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग ये भी है। दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट? ऑल ऑफ यू फाइंड आंसर बोलो चैट बॉक्स में, ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं। सो ए बी को कितना पार्स ट्रीज, एक पार्स ट्री ऐसा हो गया, एस गिव्स ए बी, ए टू ए, बी टू बी। अनदर स्ट्रिंग नहीं, एम्बिगुअस ग्रामर मीन्स वन स्ट्रिंग के लिए। सो मल्टीपल स्ट्रिंग्स, दिस ग्रामर इज अनएम्बिगुअस। ये ग्रामर है अनएम्बिगुअस ग्रामर।
तो ये सूटेबल है कि नहीं पार्सिंग के लिए? टू डिजाइन पार्सर और सिंटैक्स एनालाइजर, दिस इज सूटेबल और नॉट? ये ग्रामर सूटेबल है कि नहीं? इफ आई वांट टू डिजाइन ए पार्सर, दिस इज सूटेबल और नॉट? एम्बिगुअस ग्रामर तो सूटेबल नहीं है. नाउ दिस ग्रामर इज अनएम्बिगुअस. यस, दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज क्लियरली सूटेबल टू डिजाइन पार्सर. ठीक है, ओके. नाउ विल सी, अगर पार्सर डिजाइन करने के लिए विल गो एंड सी द डिजाइनिंग ऑफ द पार्सर. Parser. To design this parser, we have multiple algorithms. Parser एक प्रोग्राम है ना, पार्सर एक प्रोग्राम है. दैट्स वाई टू डिजाइन दिस पार्सर मल्टीपल एल्गोरिथम्स है. क्या क्या एल्गोरिथम्स है, क्या डिफरेंस है इसमें देखते हैं. सो हियर parser or syntax analyzer is a deterministic push down automata. ये push down automata है. Parsing algorithm, parser or syntax analyzer is deterministic. To design this parser, two type of algorithms exist. यहाँ पे two type of algorithms exist है, known as bottom up parsing algorithms, top down parsing algorithm. What all these are doing? ये पूरा इतना क्या कर रहा है? Only simply two things. टॉप डाउन पार्सिंग होने दो, टॉप डाउन पार्सिंग एल्गोरिथम होने दो, बॉटम अप पार्सिंग एल्गोरिथम होने दो. वन स्ट्रिंग इज मेंबर ऑफ वन ग्रामर और नॉट. मेरे पास एक ग्रामर है एंड आई हैव ए स्ट्रिंग. ऑल दिस एल्गोरिथम्स आर डूइंग ओनली वन थिंग, दिस स्ट्रिंग इज मेंबर ऑफ दिस ग्रामर और नॉट. एक स्ट्रिंग एक ग्रामर का मेंबर है कि नहीं. अगर ये टॉप डाउन में होता है डिफरेंट अप्रोच, बॉटम अप में होता है डिफरेंट अप्रोच. ओके, राइट. तो दिस इज दिस लाइक दिस टू टाइप ऑफ पार्सिंग. तो अपन पार्सर डिजाइन करने के लिए अपने पास टू अप्रोचेस है, टू टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स है. तो टॉप डाउन अप्रोच डिजाइन करें, द टेक्निक इज डिफरेंट. बॉटम अप अप्रोच डिजाइन करें, टेक्निक इज डिफरेंट. व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू? ये टू मेथड्स में क्या डिफरेंस है? तो पार्स ट्री इज क्रिएटेड फ्रॉम रूट टू लीफ. टॉप डाउन है स्टार्टिंग सिंबल, सो स्टार्टिंग सिंबल टू गिवन स्ट्रिंग, root nodes to leaves. Bottom up approach, parse tree is created from leaves to node. So leaves से start करके root. So top to bottom starting symbol से like this. This is top down parsing approach, top to bottom. अगर bottom up parsing है, this is bottom to top. Like this. So top down parser constructs root to leaf, bottom up parser created from leaf to node. So यहाँ पे so okay, derivations, leftmost derivation, rightmost derivations. Top down parsers में will use leftmost derivation, bottom up parsers में rightmost derivation, but in the reverse way I'll explain that. This is the second point. Out of these two, ऐसे two approaches है ना, which is EQ है. Why these two? One is powerful. Power means so many class of grammars के लिए वर्क होना है. Which is more powerful? यहाँ पे बोलो top down bottom up में which one will be the most powerful one? Powerful means it is suitable for more number of grammars. Observe this. Bottom up is more powerful. Bottom up is more powerful than top down. तो more powerful है. Yes, bottom up parsing more powerful. तो present days आपका practical compilers देखो, your C, C++, Java practical compilers will be developed using bottom up only. Bottom up is best, more powerful but more complex also. More powerful, more complex. अगर ये यूज़ करके डिज़ाइन करना है तो 10 lakhs lines of code जरूरी चाहिएगा आपको. So 10 lakhs lines of code, that much
पावरफुल तो है, कॉम्प्लेक्स भी है. ओके, दैट्स वाई अगर आप इतना ज़रूरी नहीं है, आपका पर्पस जो है, मेनली पर्पस होता है ना, मैं डेली ऑफिस जाना है, घर आना है, मेरे लिए बस खरीदना का ज़रूरी नहीं है ना, मैं अकेला हूँ, एंड स्मॉल कार इज सफिशिएंट, 5 सीटर कार. अगर पूरा परिवार लेके 10 मेंबर जाना है, देन दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, देन आई हैव टू बाई ए बिगर वन. सो दैट इज डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. अगर आपका लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज है, छोटा लैंग्वेज है, इतना पावरफुल वाला डिज़ाइन करना, इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करना अननेसरी. सो इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन इन सिंपल वे, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच. इतना पावरफुल नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, बट आपका रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट होता है. सो लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, देन टॉप डाउन पार्सिंग विल बी यूज्ड. लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, C++, जावा ऐसा है, तो पूरा रिक्वायरमेंट हैंडल करना है. दिस इज नॉट सफिशिएंट. द मोस्ट पावरफुल वन वी वांट बॉटम अप अप्रोच. सो लाइक दिस वी हैव 2 टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स हियर. ओके, ठीक है. ये एल्गोरिथम्स में भी सब कैटेगरीज है. आई विल एक्सप्लेन दिस सब कैटेगरीज आल्सो. पुश डाउन ऑटोमेटा है, ट्यूरिंग मशीन नहीं है पूरा. सो पार्सर इज ए सिंपली पुश डाउन ऑटोमेटा. So here we have 2 different varieties of methods. So like this, top down, अगर आप top down method use करना है, with this we have 2 algorithms with us. अपने पास 2 techniques है, recursive descent parser, LL1 parser. ये दोनों में best one is LL1 for construction part, for our examination point of view. Top down parsing में best one is LL1. Bottom up parser में again 2 algorithms है, LR parser, operator precedence parser. Out of these 2 best one is this one here. तो ये पूरा algorithms जो है, recursive descent LL1, best one is LL1. bottom up में LR, operator precedence. So LR में again सब categories है, LR0, SLR1, LALR1, CLR1. learning of all this, ये दोनों ये सिमिलर होता है. मैं यहाँ पे है ना, इतना ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है. टॉप डाउन में LL1 एक्सप्लेन करता हूँ, बॉटम अप में LR एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ऑल दिस 4 आल्सो सिमिलर काइंड. तो फ्रॉम टॉप डाउन विल सी LL, फ्रॉम बॉटम अप विल सी LR. ऑपरेटर प्रेसिडेंस कुछ नहीं, पार्स ट्रीज बना के प्रेसिडेंसेस लेना है. ठीक है, सो फर्स्ट विल सी डिफरेंस बिटवीन ये कंस्ट्रक्शन अप्रोच कैसा होता है. हाउ मेनी प्रोडक्शंस प्रेजेंट इन दिस ग्रामर. ये ग्रामर में कितना प्रोडक्शंस है. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस प्रेजेंट इन दिस ग्रामर. आई एक्सप्लेन. वो LR LL का मीनिंग्स क्या होता है वो पार्सिंग्स में जाके देखेंगे. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस हियर. 7 productions. First we will focus on, today's class we will focus on top down parsing. Top down parsing में focus करते हैं. So anyhow any parsing is, you want to check one string, this string is member of
दिस ग्रामर और नॉट, ये स्ट्रिंग इसका मेंबर है कि नहीं. सो फर्स्ट विल सी द टॉप डाउन अप्रोच. अगर टॉप डाउन पार्सर होता है ये कैसा करेगा, दैट इज सिंपली, सो हाउ दिस स्ट्रिंग विल बी मेंबर ऑफ दिस ग्रामर. सो a प्लस a स्टार a इन टॉप डाउन अप्रोच. अगर ये टॉप डाउन पार्सर है, दोनों का अलग अलग टेक्निक्स है. सो टॉप डाउन पार्सर, तो प्रीवियसली वी ऑब्जर्व हियर टॉप डाउन पार्सर, parse tree is created starting at root, that is starting symbol and two leaves. तो we are in top down parsing. ये पूरा top down parsing algorithms जो है यही मेथड से वर्क होता है. This is the method of this one. So I want to check this string is member or not. Construct parse tree. The parse tree construction starts at the starting symbol. तो नॉर्मल मेथड, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स इन्वॉल्व नहीं होता है. मैनुअली अपन कैसा पार्स ट्री डिज़ाइन करते, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हाउ दे विल डिज़ाइन पार्स ट्रीज. स्टार्ट एट द स्टार्टिंग सिंबल, एवरी नॉन टर्मिनल रिप्लेस बाय इट्स राइट साइड. तो हर एक नॉन टर्मिनल इट्स राइट साइड से रिप्लेस होता है. सो टी इज रिप्लेस्ड बाय ई इज रिप्लेस्ड बाय टी ई डैश. ओके, नाउ देर आर चैलेंजेस. ये डिज़ाइन करने में कुछ स्मॉल चैलेंजेस रहता है. Now here t I can replace, e dash I can replace. It is a top down parser. तो प्रायोरिटी विल बी, यहाँ पे t से भी रिप्लेस कर सकते, ए नॉन टर्मिनल का भी रिप्लेस कर सकते, ए नॉन टर्मिनल का भी रिप्लेस कर सकते. तो फॉर इफ यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज द प्रायोरिटी विल बी गिवन फॉर व्हाट. तो इसमें कौन सा प्रायोरिटी लेगा, दिस इज टॉप डाउन पार्सिंग. सो टॉप डाउन पार्सर यहाँ पे प्रीवियसली देखे ना, टॉप डाउन पार्सर यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस. लेफ्ट मोस्ट मीन्स द प्रायोरिटी विल बी ऑलवेज गिवन फॉर लेफ्ट मोस्ट. द प्रायोरिटी विल बी गिवन फॉर लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल. सो दैट इज द पॉइंट हियर. प्रीवियसली टॉप डाउन ट्रेसिंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. सेकंड पॉइंट, if it is a bottom up parser, right most derivation. If it is a top down parser, left most. The priority will be given for left most one here. So t will be replaced. T will be replaced by ft dash. So fixed every time. Now out of f and t, which to be replaced? एक क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन कौन सा रिप्लेस करना है. प्रायोरिटी विल बी गिवन फॉर लेफ्ट मोस्ट इफ इट इज टॉप डाउन. सो ft dash, तो f is replaced by ये. Okay, next one is t dash will be replaced. This is the main problem, comes to the main challenge top down parser has to handle. ये बहुत biggest challenge है top down parser के लिए. That is, if a non terminal t dash is having multiple productions, देखो t dash replace करना है, t dash having multiple productions here. This is one production, this is second production. Which production to be replaced? तो कौन सा रिप्लेस करना है, फर्स्ट और सेकंड, टेल मी. टी डैश को रिप्लेस करना है. इस पर टी डैश में मल्टीपल प्रोडक्शन है, राइट साइड से रिप्लेस करना है, मल्टीपल है. कौन सा रिप्लेस करना है, फर्स्ट वन और सेकंड वन. दिस चैलेंज, द डिसीजन मेकिंग पार्ट इज अ क्रूशियल वन हियर. ये जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, यही क्रूशियल है. इसको हैंडल करने के लिए पार्सर प्रॉपरली डिजाइन करना है, उसके लिए इतना टेक्निक्स है, इतना. ओके, सो which one to be replaced? Here confusion starts to the parser. तो ये confusion कैसा रिजॉल्व कर रहा है ये, इसके अकॉर्डिंग वी हैव मल्टीपल टेक्निक्स हियर. तो अगर ये रिकर्सिव डिसेंट होता है, इफ इट इज रिकर्सिव डिसेंट इट विल यूज डिफरेंट टेक्निक. इफ इट इज LL1 पार्सिंग इट विल यूज डिफरेंट टेक्निक. सो द बेस्ट टेक्निक इज LL1 का है, LL1 का. सो इट विल यूज अ टेबल बेस्ड ऑन दैट, इट अवॉइड द कन्फ्यूजन. एवरीथिंग एवरी टाइम मल्टीपल डिसीजन लेना है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होता है, एक डिसीजन लेना है, वो कैसा लेना है. हर एक पार्सिंग में सेम कॉन्सेप्ट, दोनों नहीं, द एग्जैक्ट वन, परफेक्ट वन. यहाँ पे परफेक्ट वन एज पर द इनपुट, दिस इज एप्सिलॉन, सेकेंड वन टू बी रिप्लेस्ड. द डिसीजन कैसा लेगा अपन LL1 पार्सिंग में देख से. ओके,
So like this it will decide about second one. For this we have technique. वो technique क्या है, LL1 में technique है, वो technique देखते बाद में. Same thing, first again E dash will be replaced. E dash is having again multiple productions. Which one to be replaced here? Which one to be replaced? तो first or second? यहाँ पे first है, because we want to get this input. तो वो कैसा डिसाइड होता है? Inside the parsing method we have this. Okay, E dash will be replaced by first one plus T E dash, first production. Then T will be replaced. T में एक ही है, F T dash, no issue. F is replaced by A. Then T dash will be replaced, star F T dash, F will be replaced by A. Then T dash देखो, next T dash will be replaced. Now it is T dash में यहाँ पे फर्स्ट लिया, then it is epsilon, then epsilon. तो लीफ नोट्स देखो, ये read all leaf notes, ये plus ये star ये plus ये star ये, this string is generated here. This is the approach. So what is the approach here? Top down parsing. Construct parse tree, string or leaves, proceed towards string or leaves. That is first point. Then whenever leftmost derivation is used, अगर leftmost rightmost में किसका priority देना है. And more challenging is if a non-terminal having multiple productions, this is the biggest one, non-terminal having multiple production, which one to be replaced? A replace a non-terminal having multiple productions, तो first one, second one, third one, fourth one ऐसा हो सकता है, तो कौन सा लेके replacement करना है? This decision making is a crucial one. Because of this reason, recursive descent parsings, non-recursive descent parsing, LL1 parsing, like this we have two things. So now we will go with the LL1 parsing. Okay. So now ये इसके वजह से डिविजन हो गया. If a non-terminal having, कोई भी non-terminal multiple production है, फर्स्ट लेना है, सेकंड लेना है, थर्ड लेना है, रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा डिसाइड करना है? तो रिकर्सिव डिसेंट एक तरीका से रिप्लेस करेगा, LL1 एक तरीका से रिप्लेस करेगा. रिकर्सिव डिसेंट जो है ना वो दिस विल गो बैक ट्रैकिंग में, तो फर्स्ट लेगा, दिस मेथड इज लाइक दिस, इट विल गिव द प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट वन. पता नहीं, गिव प्रायोरिटी फॉर फर्स्ट वन, नहीं हो रहा है, गो बैक, गिव प्रायोरिटी फॉर सेकंड वन, नहीं हो रहा है, गो बैक, गिव प्रायोरिटी फॉर थर्ड वन, लाइक दिस. दिस इज रिकर्सिव डिसेंट. इट्स अ बैक ट्रैकिंग अप्रोच, नॉट गुड अप्रोच. तो LL1 यूजिंग सम टेक्निक्स हियर. So we have a first and follow set tables construction है, we use some tables here. LL1 में the tables will be created using first set follow set ऐसा techniques है. ये techniques use करके है ना construction करे तो to decide about the correct production we'll use some tables. These tables are created using first and follow. So if you know first and follow values, then construction becomes easy here. तो अपन आज क्लास में फर्स्ट एंड फॉलो कैसा कैलकुलेट करना देखते. सो बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट एंड फॉलो टेबल्स विल बी क्रिएटेड. इफ यू गिव दैट वन टेबल्स टू द एल्गोरिथम, LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम विल रन प्रॉपर्ली. सो दिस इज द टेक्निक हियर. ये कौन सा टेक्निक फॉलो होता है? यहाँ पे कुछ नहीं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, कोई टेक्निक नहीं. तो फर्स्ट वाला दे दो, यहाँ पे भी सेम, फर्स्ट और सेकंड कौन सा पता नहीं, गिव फर्स्ट वन देने से स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा है, देन गिव सेकंड अल्टरनेटिव. तो आप मुझे एक क्वेश्चन पूछे, मेरे पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन देता हूँ, आप नहीं ये आंसर नहीं है बोल रहे, सेकंड वाला देता हूँ, आप ये आंसर नहीं बोले, थर्ड वाला देता हूँ, दैट इज नॉट ए बेस्ट वन. ओके राइट.
या बेटर, वो बेटर है, वो जस्ट कंपाइलर के लिए इतना ज़्यादा बेसिक्स जरूरी नहीं। ग्रामर पार्ट जो है, ऑटोमेटा पार्ट, टीओसी बेसिक्स है तो बेस्ट है, नहीं तो भी चलेगा। ओके, so let us start first and follow calculations now. क्लियर? तो यहाँ से है ना पार्सिंग, कभी आप पार्सिंग, कोई भी पार्सिंग एल्गोरिथम टच करना है तो फर्स्ट सेट, फॉलो सेट, कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम एवरी ग्रामर, फर्स्ट सेट, शैल वी स्टार्ट? फर्स्ट सेट, फॉलो सेट आर वन ऑफ द टेक्निक्स। ग्रामर का एक टेक्निक है, ये टेक्निक यूज करके टॉप डाउन पार्सर्स डिजाइन होता है, बॉटम अप पार्सर्स पे डिजाइन होता है। दैट्स वाई अगर आप पार्सिंग टच करना है, फर्स्ट सेट फॉलो सेट वैल्यू लेना मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रामर से। तो कॉमन क्वेश्चंस है ना, रिपीटेडली पार्सिंग से, फर्स्ट पार्सिंग से कभी क्वेश्चन आना है, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, क्लियर अप टू नाउ? ठीक है, first set. So we have rules. What is the first set? First set of a non-terminal, किसी non-terminal का first set, then meaning itself, प्रोडक्शन में, राइट हैंड साइड प्रोडक्शन में फर्स्ट टर्मिनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट सेट ऑफ ए नॉन टर्मिनल इज, किसी नॉन टर्मिनल का फर्स्ट सेट क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अगर ऐसा प्रोडक्शन है, द फर्स्ट सेट इज set of first available terminal information we are gathering. Okay, now see here, ऐसा कोई भी string है, see here these rules, ये rules main है, ये rules use करके किसी ग्रामर का फर्स्ट सेट फॉलो सेट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इजिली। तो यहाँ पे अगर string ऐसा है, so the first of this string is nothing but first available symbol, that is ये string का फर्स्ट ऐसा लेते, if प्रोडक्शन इज देयर, अगर ये प्रोडक्शन ऐसा है, A gives AX, whenever we have any प्रोडक्शन, कभी प्रोडक्शन है, फ्रॉम द प्रोडक्शन इफ आई वांट टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ए नॉन टर्मिनल, किसी नॉन टर्मिनल का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, तो ये है, सो द फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट नॉन टर्मिनल ए का प्रोडक्शन में क्या है, राइट साइड प्रोडक्शन, फर्स्ट अवेलेबल टर्मिनल, यहाँ पे ये टर्मिनल है ना ये, सो द फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए इज नथिंग बट ये। तो मान लो अगर मेरा प्रोडक्शन ऐसा है, ए गिव्स AX और BY, देन व्हाट विल बी माय फर्स्ट ऑफ ये, टेल मी। अगर ऐसा है, प्रोडक्शन ऐसा है, तो फर्स्ट ऑफ ये क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए, व्हाट विल द फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए फॉर दिस, मल्टीपल प्रोडक्शंस है यहाँ पे, वी हैव मल्टीपल प्रोडक्शंस, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए फॉर दिस, सिंपली यहाँ से ए प्रोडक्शन से ये प्रोडक्शन से बी, सिंपली इट इज A, B, दैट्स ऑल। सो फर्स्ट सेट क्या गैदर करेगा, जो प्रोडक्शन में फर्स्ट अवेलेबल टर्मिनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्शंस में टर्मिनल्स अवेलेबल है तो वेरी गुड, विल गैदर दैट, बट समटाइम्स नॉन टर्मिनल कैन प्रेजेंट हियर, राइट साइड में नॉन टर्मिनल है, देन आई वांट टू कैलकुलेट, द प्रोडक्शन इज लाइक दिस, प्रोडक्शन ऐसा A गिव्स BX है, राइट साइड में नॉन टर्मिनल है, आई वांट टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ए, देन फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट नॉन टर्मिनल है तो टेक द फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी में क्या है वो ले लो। हियर B does not produce epsilon,
यहाँ पे b एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं करना है. b does not produce epsilon. If b produces epsilon, then this is different here. तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस जो है, एप्सिलॉन है तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा लिटिल बिट प्रॉपरली कैलकुलेट करना है. तो अगर एप्सिलॉन नहीं है, दैट विल बी वेरी इजी वन. सो हियर b produces epsilon. देखो फोर्थ वन देखो, we have a production like this, a gives bx. What is first of capital A here? First of capital A is first of capital B. First of capital B. तो अगर B में एप्सिलॉन होता है, B में एप्सिलॉन होता है, then we'll take first of capital B. First of A is nothing but first of A क्या है? First of capital B only. First of capital B. तो first of capital B में अगर एप्सिलॉन होता है, then include all the elements and exclude epsilon. Exclude epsilon. Okay, epsilon को exclude करना है. Exclude करके will replace in the position of B. Okay, so minus will replace here. यहाँ पे replace कर देते. You can check like this. ऐसा check कर लो. Will replace here. Again calculate. तो कभी एप्सिलॉन आ रहा है, कोई भी दूसरा ना, फर्स्ट ऑफ ये कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग फॉर फर्स्ट ऑफ बी. ये फर्स्ट ऑफ बी में कुछ एलिमेंट्स है, एप्सिलॉन भी है. टेक रिमेनिंग एलिमेंट्स, एप्सिलॉन को एक्सक्लूड करके बी में रिप्लेस करो. अगेन रिकैलकुलेशन. कभी एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिकैलकुलेशन करना है. अगेन रिकैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ए. व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ए नाउ? फर्स्ट ऑफ एक्स यूनियन फर्स्ट ऑफ एक्स. First of x. Okay, so this is the way we'll calculate. I'll give some examples देता हूँ, don't worry. These are the rules. ये 4 rules main है, 4 rules use करके है ना, we'll see some examples now. The first example here is ग्रामर ऐसा है. तो ग्रामर इज लाइक दिस. कैन यू टेल मी, इजी वाला कैलकुलेट करेंगे. कैन यू टेल मी व्हाट इज फर्स्ट ऑफ बी हियर? ऐसा ग्रामर में व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ बी वैल्यू? बहुत इजी है. सो एप्सिलॉन केस में थोड़ा केयरफुली कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ बी वैल्यू? So this is our second point. Second point use कर लो. If we use the second point, what is the first of B? D है. Okay, B का राइट साइड जो है, so first of B is right side available first terminal, that is D here, D. What is first of A? First of capital A. First of capital A का right side available terminal information. इसमें कभी एप्सिलॉन होता है, we have to include epsilon also. That's why first of A is nothing but यहाँ पे ये है. Okay, यहाँ से epsilon, include epsilon also. So A epsilon. Okay, now remaining is first of S. This is using our fourth point. First of S. Fourth point use करके. What is the first of S value? Tell me. First of S value क्या होगा? सो एप्सिलॉन इंक्लूड हो रहा है कि नहीं? एज सेम फॉर्मूला यूज कर लो. सो फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ बी. फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ ए.
फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ए एप्सिलॉन. सो व्हाट वी आर सेइंग, टेक ऑल द एलिमेंट्स माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को माइनस करो. सो यहाँ पे आई विल जस्ट गिव हियर, टेक ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज ए को ले लो, एप्सिलॉन है, एक्सक्लूड दिस, एक्सक्लूड दिस, एंड ये का जगह में जो है, बिकॉज ऑफ ये वी आर गेटिंग एप्सिलॉन, ए का जगह में एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट हियर, सब्स्टिट्यूट. Again recalculate first of S. What will be the first of S now? First of S is union first of B. Same thing, epsilon यहाँ पे substitute करो B का जगह में, recalculate union first of B. What is first of B? D. D here. So this is D. तो epsilon include नहीं है इसमें, epsilon is not included. क्लियर है, सेम फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ बी एलिमेंट्स, एप्सिलॉन आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करो, एप्सिलॉन आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करो, देन रिप्लेस हियर. क्लियर है, ठीक है. नाउ विल टेक द केस वेयर विल गेट एप्सिलॉन आल्सो इन दिस. विल सी द अदर एग्जांपल. सेकंड एग्जाम्पल लेंगे. राइट, महारिविजन में जनवरी में हो सकता है. निशिव कुमार, ऑल ऑफ यू जस्ट गिव मी व्हाट इज फर्स्ट ऑफ एस. इसमें फर्स्ट ऑफ एस का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एस वैल्यू हियर. The grammar is like this. What is the first of S? First of S value. So anyhow, first of A is, first of A क्या है, A epsilon, first of B is B epsilon, first of C is D epsilon. तो फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट ए एप्सिलॉन. तो इसमें ए को इंक्लूड करो, फर्स्ट ऑफ एस यहाँ पे ले रहा हूँ, ए को इंक्लूड करो, एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट करो. अगेन रिकैलकुलेट, यूनियन फर्स्ट ऑफ एस इज, अगेन कैलकुलेट करो, यूनियन फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ बी. व्हाट इज फर्स्ट ऑफ बी नाउ, बी एप्सिलॉन. सेम थिंग, बी को इंक्लूड करो, एप्सिलॉन को बी का प्लेस में सब्स्टिट्यूट करो. कभी एप्सिलॉन आ रहा है ना, ये प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो फिर सब्स्टिट्यूट बी में एप्सिलॉन, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, again calculate, union first of C.
फर्स्ट ऑफ सी. व्हाट इज फर्स्ट ऑफ सी? डी एप्सिलॉन. डी एप्सिलॉन. ओके, डी को इंक्लूड करो. अगेन एप्सिलॉन है, सी का प्लेस में सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट हियर. अगेन रिकैलकुलेट. सब्स्टिट्यूट कभी करें, रिकैलकुलेट. यूनियन फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन. तो यहाँ पे अगेन कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन भी आएगा ना. लास्ट में वी आर गेटिंग एप्सिलॉन ऑल्सो. यूनियन फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन. So the first of S value is A, B, D, epsilon. So this formula is the main thing. अगर ये formula आपको समझ में आ गया ना, simple, nothing will be there. Clear है? Is it clear? So we'll go with follow calculations then. Follow calculation. यहाँ पे भी rules है. So if you know these rules, that will be easy. Follow calculation also simple. We have rules here. यहाँ पे भी है ना रूल्स को एज इट इज इम्प्लीमेंट करना है. व्हाट इज फॉलो? फॉलो ऑफ ए नॉन टर्मिनल इज, वो नॉन टर्मिनल का राइट साइड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन देता है अपन को. तो वो नॉन टर्मिनल राइट साइड जो है उसका अवेलेबल. दैट्स वाई यहाँ पे कैलकुलेशन का टाइम में अपन राइट साइड वैल्यूज में डिपेंड होते ज़्यादा. ठीक है. सो ठीक है. So the rule here is follow of a non-terminal, follow of starting symbol. कभी कोई भी starting symbol का follow of starting symbol is dollar. तो डॉलर लेना है, फर्स्ट डॉलर लेना है, उसके बाद बाकी है तो भी कैलकुलेट करना है. follow of starting symbol is dollar. What is this dollar here? डॉलर यहाँ पे क्या है? पार्सिंग में है ना, स्ट्रिंग को एंड मार्कर, स्ट्रिंग का एंड में डॉलर्स लेते. कोई भी इनपुट स्ट्रिंग एंड है तो वो डॉलर. दैट्स वाई द लास्ट वन, तो दैट इज डॉलर हियर. डॉलर क्यों आ रहा है? तो स्ट्रिंग एंडिंग एंड मार्कर बोलते. तो स्ट्रिंग का एंड मार्कर डॉलर होता है. तो फॉलो ऑफ एस में अपन ऑलवेज लेना है. दैट इज द फर्स्ट रूल. फॉलो ऑफ एस इज स्टार्टिंग सिंबल. नेक्स्ट वन, इफ द ग्रामर इज लाइक दिस, ऑब्जर्व हियर, ग्रामर इज लाइक दिस. आई वांट फॉलो ऑफ बी. Fall of B, fall of B. What is fall of B here? Next one first. Next one first. So what is next one? B का fall of B चाहिए. B का next जो है, B का next का first लेना है. B next is what? X. Take first of X. So यहाँ पे है ना, next का first लेते most of the time. Next symbol का first. First you know fall of set ये भी है, first में depend होता है. That's why first of next element. That's why नेक्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट. हियर एक्स डज नॉट प्रोड्यूस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन केस मेन है. एक्स डज नॉट प्रोड्यूस एप्सिलॉन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, दिस इज सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट इज इफ द ग्रामर इज दिस वन, ग्रामर इज लाइक दिस. सो ए गिव्स अल्फा बी. तो ए बी इक्वल मीनिंग है ना, इक्वल मीनिंग है. तो ये अल्फा बी सेम है. सी हियर, फॉल ऑफ बी इज नथिंग बट, अगर ग्रामर ऐसा है, फॉल ऑफ बी, फॉल ऑफ लास्ट सिंबल जो है, फॉल ऑफ बी इज नथिंग बट फॉल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सिंबल. लास्ट सिंबल फॉलो, लेफ्ट हैंड साइड सिंबल का फॉलो लेके, फॉल ऑफ बी इज नथिंग बट फॉल ऑफ लास्ट सिंबल इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड सिंबल का फॉलो का वैल्यू असेट कर देते. कैलकुलेट फॉलो ऑफ ये एंड देन दिस वन. दिस थ्री रूल्स. यहाँ पे एप्सिलॉन्स किधर भी नहीं, सिंपल. ओके, तो आई विल गिव एन एग्जांपल हियर. एक एग्जांपल देता हूँ, ये रूल्स यूज करके आंसर बोलो.
The grammar is like this. What will be the fall of S? What is fall of S here? Simply S is starting symbol. Starting symbol. Fall of starting symbol जो है डॉलर फिक्स्ड. दिस इज डॉलर. डॉलर है. Fall of S is dollar. Then what is fall of A? First point. A first point. What is fall of A? Fall of A. Use the second rule here. Second rule use करो. I want fall of A. Fall of A is nothing but A का next element का first. For that is first of B. First of B. What is first of B? B here. So fall of capital A is nothing but first of B. Then what is fall of B? So fall of last symbol. Fall of last element. What is fall of B here? Fall of last symbol. Third rule. Fall of B is nothing but, so left hand side नॉन टर्मिनल का फॉलो कैलकुलेट करके इसमें असाइन करना है. फॉल ऑफ B इज लास्ट सिंबल. फॉल ऑफ S वैल्यू असाइन करना है. तो फॉल ऑफ S, that is dollar. So fall of S dollar, fall of A B, fall of B dollar. This is it clear now? 3 points. Clear? Okay, we'll take one more example. Right, all of you calculate what is fall of S. Fall of A, fall of B. इसका ट्राई करो. Try for these things. Fall of S, fall of A, fall of B.
What are the values of this one? First one, fall of starting symbol. Fall of starting symbol is $. Fall of S is $. Then fall of capital A. Fall of A, from here, from here B. Second point. Third point is fall of B. B कहाँ पे देखो, next one का first, that is B here. B यहाँ पे भी है, next one first, that is A. B comma A. This is a crash course. ये क्रैश कोर्स है. फोर्थ पॉइंट देखो. नाउ ऑब्जर्व द फोर्थ पॉइंट हियर. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्स प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन. Start from now. Not given any test series. I will get in MTech from it. Not required. TOC ग्रामर आइडिया है तो अच्छा है, नहीं तो मैं जितना पढ़ा है ना आज ग्रामर में उतना बस है. हाँ संदीप, सफिशिएंट, बट टेस्ट सीरीज तो देना है. यू हैव टू गिव टेस्ट सीरीज. You have to give test series. टेस्ट सीरीज देख के आप कितना रैंक में है देख लो. Okay, right. So see here, I want to know fall of B. Fall of B is first of next symbol, first of X. X में एप्सिलॉन है, so यहाँ पे एप्सिलॉन will create lot of trouble. Trouble means थोड़ा लॉजिकल ट्रिकी होता है. एप्सिलॉन है तो थोड़ा ट्रिकी होता है. If it is a TOC or if it is a compiler, in both cases, wherever epsilons are there, handle carefully. देखो, दिस इज द प्रॉब्लम. दिसंबर आने से सभी लोग है ना, दे विल स्टार्ट डरने का स्टार्ट होता है. सी हियर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जस्ट आप कॉन्सेप्ट से नहीं, फिजिकली हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ. बिलीव ऑन योर वर्क. आप जितना हार्ड वर्क किए ना, बिलीव ऑन दैट. दो वो 3 आवर्स में क्या होने वाला किसी को पता नहीं. आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स, दे आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल. बिकॉज ऑफ ये डर के वजह से है ना, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा डरने से, प्रॉपर आइडियाज़ नहीं आएगा. दैट्स वाई बिलीव ऑन योर वर्क. सो बिलीव ऑन योर लक. जाके अच्छा परफॉर्म करो, गिव योर बेस्ट, लिव अबाउट द रेस्ट. रिजल्ट को लिव अबाउट द रिजल्ट. वो कैसा आने वाला है वैसा आ जाएगा. बट टिल दैट टाइम गिव टेस्ट सीरीज, रिवीजन अच्छा करो, प्रैक्टिस अच्छा करो, टेस्ट सीरीज देते जाओ. तो सभी लोग यहाँ पे देख रहा हूँ मैं चैट बॉक्स में, डर लग रहा है, डर ऐसा नहीं. तो आप काम करते रहो. रिजल्ट, प्रेशर कब बिल्ड होगा, आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट. ठीक है. दैट्स वाई डोंट, रिजल्ट आपके बारे में वो नहीं है, आपके पास नहीं है, तो वो कुछ भी होगा वो होगा. सो दैट्स वाई डोंट वरी. मैं लास्ट टाइम एक स्टूडेंट को देखा था, गेट में इतना अच्छा नहीं रैंक आया.
बट बाद में PSUs में गॉट टॉप रैंक सेलेक्टेड, तो वो किधर भी आप इतना मेहनत करने से वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा. सो बिलीव ऑन योर वर्क, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड टिल एग्ज़ाम. ये 2 महीना बहुत क्रूशियल है, 1.5 मंथ जो है ना बहुत क्रूशियल है. सो दैट्स वाई आप अपना वर्क में ज़्यादा फोकस करो. रिजल्ट में फोकस करें तो स्ट्रेस में रिजल्ट जो होने वाला है वो हो जाएगा. ओके ठीक है. सो डोंट गो इन दैट वे, वो वे में मत जाना. ठीक है. ओके देन व्हाट इज, अगर प्रोडक्शन ऐसा है A gives BX, what is fall of B here? Fall of B is first of x minus epsilon. Fall of B is first of x, but x contain, देखो x में है ना एप्सिलॉन है, तो कभी एप्सिलॉन है सब्स्टिट्यूट करके रिकैलकुलेट करना है. सब्स्टिट्यूट करो, रिकैलकुलेट करो. तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे x का प्लेस में सब्स्टिट्यूट करो. अगेन फॉल ऑफ b, व्हाट इज फॉल ऑफ b नो, लास्ट एलिमेंट है, देन फॉल ऑफ a वैल्यू, यूनियन फॉल ऑफ a, यूनियन फॉल ऑफ a, लाइक दिस. So I will give one example of this. This is the grammar. This is the grammar, okay? Or if you tell me what is fall of E here, from this grammar, what is fall of E? Fall of E क्या है? E is a starting symbol. E is a starting symbol. That's why fall of E is nothing but simply dollar. Fall of E is dollar. Okay. Right. Then what is fall of T? Very important. Fall of T. Okay. Fall of E dash भी calculate करते. We'll calculate E dash also. What is fall of E dash? Fall of E dash. E dash is there here, last symbol. So last symbol का calculate this fall of E equal to fall of E. Fall of E value assign करो इसको. Last symbol value assign करो. So fall of E dash also dollar here. Calculate fall of T dash. Fall of T. Fall of T. Fourth rule. यहाँ पे fourth rule applicable होगा. This fourth rule is applicable here. Plus dollar नहीं. नहीं. Fall of E dash is only dollar. E dash last symbol है ना, किधर इधर से कोई यूज नहीं है. So that's why not. Fall of last symbol is left hand side symbol का follow assign करना है इसको. So third rule. Fall of E dash comes under third rule. What is fall of T value? Fall of T. Fall of T value. The fall of T value is fall of T. और T कहाँ पे है? T is there here. T is there here. तो next one का next symbol का first, that is first of E dash. First of E dash. तो what is first of E dash here? यहाँ पे देखो first of E dash is plus epsilon. From here plus, from here epsilon, plus epsilon. ठीक है. तो include plus, include plus. कभी epsilon आ रहा है. Fourth rule. So fall of B is nothing but first of x. Take all elements. Epsilon जो है exclude this. Substitute करो x का जगह में. तो E dash का जगह में यहाँ पे plus include कर रहा हूँ. एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट करो. E dash, wherever E dash is there, substitute. Recalculate. Again calculate fall of T. What is for T? क्या है? Last symbol है. Fall of T is nothing but fall of E and fall of E dash. So fall of E, fall of E dash value assign करो. That is dollar. Dollar is also included. So union
fall of t as well as t dash, तो दोनों fall of e, sorry, fall of e, that is plus dollar. So the answer is fall of t is nothing but plus dollar. Fourth rule. Is it clear now? Is it clear? So fourth rule apply करो properly. कभी यहाँ पे देखो second and fourth similar है. Here x does not produce epsilon. So fall of p is first of x. अगर x में epsilon नहीं है, directly will take. The fourth point, अगर x में epsilon है, then first of x minus epsilon. epsilon को exclude करो. epsilon को कभी exclude कर दिए, substitute करना है. substitute करो, then recalculate. यहाँ पे क्या है? So I have first of fall of t is first of e dash. What is first of e dash here? Plus and epsilon. Plus को include करो. epsilon को है ना e dash का प्लेस में substitute करो. substitute e dash में epsilon. Again recalculate fall of t. What is fall of t now? Fall of e union fall of e dash. You can take fall of union fall of e dash. Fall of e dash also same value. That's why I'm not including union fall of e dash. So this is also dollar. This is also dollar. So plus and dollar both will be included. Okay. So fourth rule is main thing. Fourth rule is very very important. So very simple. कभी epsilons आ रहा है. Carefully handle that. So first and follow में ये सिर्फ इतना ही है. तो epsilon case is the main thing. अगर epsilon case properly handle कर दिए, that's all. That's it. There's nothing will be there here. Okay? ठीक है. मैं एक homework देता हूँ, आप try कर लो. I'll give one question as homework. All of you try this. Same similar वाला. So fall of each element. Compute fall of each non-terminal. Okay. So try this as a homework. This is about the grammar here. ये grammar है. यहाँ पे है starting symbol है, यहाँ पे भी है. Both possibilities you have to add. Fall of e क्या होगा? Dollar होगा and closing parenthesis भी होगा like this. I'm giving hint also. Okay? ठीक है, इसका try करो. So we'll end here with this. तो parsing algorithm जो है actual algorithm using this, that I'll discuss in the next class. So once again, if anybody want to join Telegram channel, तो for any updates, questions, practice उसके लिए ये channel में join कर लो. तो आपको यहाँ पे है ना एग्ज़ाम्स का वही आप अभी बोल रहे ना, तो गाइडेंस टिप्स मोटिवेशनल थिंग्स, तो मैं इसमें भी लाइव भी आता हूँ, तो आप कुछ भी डाउट्स है वो भी पूछ सकते. सो जॉइन दिस चैनल. दिस इज़ माय चैनल. हियर आई एम डिस्कसिंग थियरी ऑफ कॉम्पिटिशन, कंपाइलर डिज़ाइन, रिलेटेड क्वेश्चंस, सब्जेक्ट का डाउट्स वो पूरा डिस्कस करता हूँ यहाँ पे. यू कैन बी इन टच विथ मी यूजिंग दिस. ओके ओके. एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड? आस्क मी नाउ. So with this, the basic part जो है
प्रिपरेशन जो है पार्सिंग एल्गोरिथम के लिए वो आज क्लास में डिस्कस कर रहे थे. पार्सिंग मेथड जो है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. Any doubts? So all of you please focus on your अगर आप ऑलरेडी सब्जेक्ट हो गया रिवीजन में फोकस कर. ऑलरेडी स्टूडेंट जो है मेरा स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासेस में. डू लॉट ऑफ रिवीजन वन थिंग, देन प्रैक्टिस. एग्जाम्स देते जाओ. अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम भी आया डोंट वरी. सो डीमोटिवेट नहीं होना. कीप ऑन डू प्रैक्टिस. Okay guys, have a good day. Bye bye. See you tomorrow. Again we have class same time tomorrow at 8 a.m. We'll discuss with other concept in tomorrow session. Thank you. Have a good day. Bye bye.